लास्ट क्लास हमर रिकॉर्डिंग ହେଇଥିଲା କି? ना रिकॉर्डिंग ହେଇଥିଲା ହେଇନଥିଲା रिकॉर्डिंग ହେଇନଥିଲା। लास्ट क्लास बीच में ग्लिच आ गया था ना तो फिर हम्म लिंक में भेजा था ना वो यूट्यूब का सेम ही है नियर तुम्हारा यूजर नेम कैसे कर लो वन सेकंड सर उनका 28 था ये नियर करेक्ट पासवर्ड कौन था 11 यूजर 27 वो 27 था पासवर्ड पासवर्ड 1 to 7 okay so we'll start directly so we have created the company and company code in the third thing we have to create the plan right so ओके how सर to create the plan we'll go for the spro screen spro then after you have to go for the sap reference img then after enterprise structure अच्छा and within enterprise डेफिनेशन structure we'll go for the definition so plan create kara pai hame jiba enterprise structure then definition then after you have to go for the logistic general here you have to go for the logistic general within logistic general you will find here the define copy delete check plan define copy delete check plan so click on execute here you have to click on execute so execute kala par then you will find here the define plan so double click on the first line define plan it called the data is logged by the user this one so data log you message टा ना कहीं के आसे जितने बेले ये जो हमें सर्वर यूज करूँचे so there will be multiple people are सर using the same server हाँ सर गुड इवनिंग सर good evening हुआ सर मते टिके खाली सेटा फास्ट रो टिके खाली टिके गाइड कर दियंतु मु भी सेठरे देखि देबी सर हाँ मैंने लास्ट क्लास रे हमें जो वीडियो रे हमें आगे कंपनी कोड क्रिएट करते एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रो ठीक अछि आज हमें ଏବେ क्रिएट करूचे प्लान क्रिएट करूचे ठीक अछि हमर जोटा मु लास्ट क्लास रे नेइतिली हमरो गोटे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहउची ଯେମିତି କି कंपनी कोड प्लांट स्टोरेज लोकेशन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन तो लास्ट आगे क्लास रे कंपनी कोड हमें एसएपी रे क्रिएट करथिले राइट सो आज क्रिएट करा जाउची प्लांट सो प्लांट क्रिएट करिया पई जो पाथ रहउची माने को वे रे हमें सेटा क्रिएट करिबा तमे सर्वर लॉगिन करिवो तो फास्ट जिनस लागे तमे ना जो फास्ट रिकॉर्डिंग गुडा देखिवो होला एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कोन काहे कि हम सेटा क्रिएट करिबा सेटा को इनो कवर करिवानी कारण ऑलरेडी सेटा दी थर कवर हेची तो सेटा रिकॉर्डिंग देखिबो मु एटा डायरेक्टली हमें प्लान क्रिएट करछे सो प्लान क्रिएट करिया पई हेले हमरो तमे लॉगिन करिवो लॉगिन कला पारे ए टाइप रो स्क्रीन आसीबो तो ए स्क्रीन रे तमे एडे पुट करिवो एसपीआरओ गोटे टी कोड ठीक अछि एटा मन रखिबो एटा पुट करिकी एंटर करिवो एंटर कला पारे ए स्क्रीन टा आसीबो एटा कोनती कस्टमाइजिंग स्क्रीन तो ए स्क्रीन रे तमे क्लिक करिवो एसएपी रेफरेंस आईएमजी ऊपर एडी जो बॉक्स ठीक अछि आप रे क्लिक करिवो थरे एंटर करिवो एंटर कला पारे तमे एडे पाइबो एडी हम सब कॉन्फ़िगरेशन उरा करताओ so here what you have to do go for the enterprise structure एडी enterprise structure लिखा है ये जो arrow mark दिया है you have to click on that arrow marker click कले एटा एमती expand हबो then एटी थिबो definition तो definition को पुनी expand करिवो arrow mark ऊपर क्लिक करिवो expand हबो then एटी थिबो logistic general को पुनी expand करिवो ता भीतर एटी तमे पाइबो define copy delete check plan ठीक है so एटी हमें प्लांट को डिफाइन करिवा so how to do that you have to click on the clock symbol is called as the execute symbol it is called as the execute so click on execute kala pare you will find three options like this so you have to click on the first define plan ठीक है एटी क्लिक कले तमे एटी डिफरेंट प्लांट तमे देखिबो जोडा कि ऑलरेडी माने सिस्टम रे थिबो तो जते बेला हमें गोटे निजो पई गोटे प्लांट क्रिएट करिबा
At that time, what you have to do, you have to copy from the standard one. So standard time कौन कहते 1000 आम नहीं सो ये 1000 अच्छी यहाँ मुझे सिलेक्ट करी केमी सिलेक्ट करी ये जो बॉक्स गुड़ाक अच्छे लेफ्ट साइड रे ये क्लिक कले सी लाइन आइटम गुड़ा सिलेक्ट होता है सो मु 1000 प्लांट को सिलेक्ट करी देन क्लिक ऑन कॉपी कॉपी कला पर तुम ये निजर प्लान डिफाइन कर जोटा 1000 रु कॉपी करके आम निजर गोटे प्लान बनवा आम निज प्लान कौन डिसाइड करते आम कंपनी कोड कौन बनईचे लास्ट क्लास में कौन कंपनी कोड बनई कार मन अच्छी सर वो शायद मेरा था। क्या नाम था सुष्मिता प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सुष्मिता प्राइवेट लिमिटेड तो मुझे सुष्मिता मे भी आम कंपनी कोड देते बोलते SCUM देते ना हाँ पर वो सर आपके इसमें नहीं मतलब वो सेव नहीं हुआ है शायद क्योंकि वो तो बीच में से ही कट गया था ना उस दिन लास्ट टाइम। सेव हुआ होगा नहीं सर ये है ना ना Okay, let's do one thing. We'll create it quickly. ठीक ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ New କରିଦେବା one. Create new one. ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଉଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇବା ତାପରେ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଦେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଆମେ ଆଉ ସେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାନି so first we have to create the company so to create the company you have to go for the enterprise structure then definition then financial accounting so within financial accounting you have to define the company here so click on execute so here we have to copy the standard one 1000 select kariya click on copy and then give the company name so Susmita SCUS mu नहीं जाउची and 01 एटा केते कैरेक्टर मैक्सिमम होई पारे 6 कैरेक्टर जो कोडटा सिक्स बनेबो सेटा मैक्सिमम 6 कैरेक्टर होई परिबो बट मु नहीं जाउची 5टा कैरेक्टर मन कर मु नउची so this is Susmita Private Limited let example right land number is land number 09 जहाँ भी एड्रेस नहीं जाओ पोस्टल कोड कोड दियो राइट सिटी आइगला भुवनेश्वर लेट एग्जाम्पल योर ऑफिस कंट्री इज इंडिया language key is English and the currency is INR put this much then click enter then click on save so if you want to create your own transport request number just click on create so ठीक है just click on save now that is fine so we have created the company as SUS01 we have created this one SUS01 second we have to create a company code ro length रहियो maximum 4 characters so let example SUS1 mu नउची then we have to create two plant ro गोटे plant हेगला मन कर SU01 and second plant is let example SU02
and storage location will create as 1000 2000 a type रे ही बनेगा. Okay, this is the company we have created. Then go back. Then after you have to go for the company code creation. So here you have to create the company code. Edit, copy, delete, check company code. So click on execute. Copy, delete, check company code. Double click here. Then you have to click on the copy symbol. This one, copy. Then from company code, we will copy from the standard one. 1000 is the standard one. And two company code means which company code you want to create. So we want to create SUS1. So click on continue. And then do you want to copy the GL account? Click on yes. Do you want to local currency? Yes. So put here the currency is INR. स्टेप गुड़ा मन रखिए बट रियल टाइम रे एटा एफआई कंसल्टेंट करिवो हम माने करिवानी और एटा प्रैक्टिस सर्वर हम एथि पय करछे कारण को विदाउट कंपनी कोड वी कैन नॉट डू गो अहेड सो एटी लिखा है डू यू वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस नो लिखा है नो क्लिक करो राइट सो देन आफ्टर क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन then you will find a pop-up like this ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପର pop-up ପାଇବ ତମେ ଜାଣିବ କି it is already copied right ଏଠି ଲେଖିଛି interval without ବୋଲା ବୋଲା ଏଟା କପି ହେଇସାରିଛି so ଏଇ କେସରେ ତମେ ଏଠି cancel କରିବ then cancel again so you will find here company code 1000 copy to SU S1 that means SU S1 company code have been created so click on continue so ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ completed activity ଯଦି click କରିବ ଏଠି ତମର SU S1 company code is created so now what you have to do just go back then go with the edit company code data edit company code data को जीवो then go for the position तो जो कंपनी कोडटा तुम क्रिएट करछ सेटा को सर्च करिवो हम क्रिएट कले SUS1 क्रिएट कले तो पुट दिस वन देन क्लिक एंटर सो एटी देखो SUS1 कंपनी कोड हम क्रिएट करछ बट तार ना अछि कोन बेस्ट रन जर्मनी काहे कि कारण जो हम 1000 रु कॉपी करी कले 1000 रो जो नेम एड्रेस अछि सेटा कॉपी के आसी छि तो एटी कोन करिया हम आप डबल क्लिक करिवो सेटा चेंज करिवो तो एटी दे देला हम सुस्मिता कंपनी कोड एड्रेस हे गला मन करो भुवनेश्वर कंट्री हे गला इंडिया करेंसी आईएनआर लैंग्वेज की हला इंग्लिश एती पुट कला पर देन क्लिक एंटर देन क्लिक ऑन सेव सो नाउ कंपनी कोड इज क्रिएटेड सो कंपनी कोड क्रिएट कर देले तापर हम जेबा प्लान क्रिएट करबा सो प्लान कोड क्रिएट करबा लॉजिस्टिक जनरल देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भीतर हम कंपनी कोड क्रिएट करछे तापर एटा को आउथरे क्लिक कर दबो एटा मिनिमाइज हे जिवो थरे क्लिक कर एक्सपेंड तापर आउथरे क्लिक कर मिनिमाइज देन हम प्लान क्रिएट करिया प्लान कोथरे क्रिएट करबा लॉजिस्टिक जनरल रे सो हियर डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लान राइट सो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट डिफाइन प्लान को जिबा सो हमें स्टैंडर्ड रो कॉपी करिवा सो सिलेक्ट द लाइन आइटम क्लिक ऑन कॉपी सो प्लांट रो ना कोन दबा प्लान करछे SU01 so put here SU01 so this is सुस्मिता प्लांट 1 लेट एग्जांपल राइट नेम 2 माने कोन जदी तुम प्लांट र किसी अलग निक नेम अछि किबा किसी अल्टरनेटिव नेम अछि तुम एटे देई परिबो बट इट इज ऑप्शनल सो देन ए स्क्रीन आ कोन दबा एटा जोटा फैक्ट्री कैलेंडर माने कोन सब प्लांट माने गोटे हॉलिडेज लिस्ट रहता है ठीक अछि सो से हॉलिडेज लिस्ट जोटा हमर एचआर टीम तुम क्रिएट करके दबो तमे से ऑप्शन भीतर गोटे चूज करिवो माने जोटा एचआर देथिबे सो हमें इंडिया पई मनकर चूज करबा एठी इंडिया पई देखि दबो आईएन थिबो बोधे इंडिया पई एठी अछि फैक्ट्री कैलेंडर आईएन सो एटा पुट करियो जस्ट क्लिक एंटर एंटर कला परे एठी तुमको प्लांट रो डिटेल्स दबा पई माने आसीबो सो प्लांट टाइटल रे तमे कंपनी दे परिबो प्लांट इज आल्सो ए कंपनी सो एठी तारो डिस्क्रिप्शन दबो तो प्लांट 1 मन करो सर्च टर्म कौन सर्च कले प्लांट डिटेल्स टा हमको इजीली मिल परिबो मनकर मु कहली कि सुस्मिता सर्च कले आसीबो राइट देन सर्च टू जहाँ भी रखिया तबे रखी परिबो समथि कि मैंडेटरी नै
then address of the plant एटी address ହେଇଗଲା मनकर land number ହେଲା 09 मनकर जगमोहन नगर right house number is this one district ହେଇଗଲା हमर लाडी हम लोग खोर्धा postal code ହେଇଗला 765678 city ହେଇଗଲା भुवनेश्वर country ହେଇଗଲା इंडिया रीजन माने ହେଲା स्टेट हमर ओडिशा पई आसीबो एटी 18 आसीबो ओडिशा टाइम जोन पई इंडिया पई आईएन दे देबो एंटर देन क्लिक ऑन सेव एति पुट करके तमे सेव करिवो डेटाटा को सो तमरा प्लान क्रिएट हे जिवो राइट आमे प्लान को दीटा प्लान पई मनकर गोटे प्लान तमरा भुवनेश्वर अछि आ गोटे अछि कटक रे अछि सो आ गोटे प्लान क्रिएट करिवो केमति करिवो मु जोडा आमे क्रिएट करले सेटारु कॉपी करके आ गोटे बनौछि सिलेक्ट द लाइन आइटम देन क्लिक ऑन कॉपी सेकंड प्लान रो कोड टा मु दे दोछि SU02 let example and it is Susmita plant 2 factory calendar is India click enter address it is plant 2 search term Susmita search कले ही आसीबो एटा जगमोहन नगर जगह रे मु अनेकर लिखि दोछि बीडीए कॉलोनी राइट देन हाउस नंबर हे गला मनकर 18 देखो तुमको जोटा डेफिनेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस रे कहि दिल व्हाट इज प्लांट व्हाट इज कंपनी कोड ये सब जिनस गो थ्रू करिवो राइट सो देन पोस्टल कोड इज 980 एटा ला सिटी हे गला हमर कटक रे अछि हमर प्लांट फैक्ट्री कैलेंडर रीजन इज सेम देन क्लिक एंटर देन क्लिक ऑन सेव सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट टू प्लांट हमें दीटा प्लांट क्रिएट कले so plant creation pore see we have created up to plant in our server plant creation pore then we will go for the storage location creation so storage location create करिया पई हेले हमें जिबा मटेरियल मैनेजमेंट ठीक अछि देखो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भीतर रे हमें कंपनी कोड क्रिएट करछे लॉजिस्टिक जनरल भीतर प्लांट क्रिएट कले then you have to go for the material management within material management you have to create here the storage location maintain storage location click on execute so here you have to put the plant so हमरो जो प्लांट हमें क्रिएट कले ता अंडर रे ही हम स्टोरेज लोकेशन बनै परिबो हमरो प्लांट हमें कोन क्रिएट कले SU01 so put your SU01 first then click enter then go for the new entry so here you have to create the storage location so storage location भी alpha numerical हे परिबो बट मु एटा नउची मनकर 1000 एला हमरो स्टोरेज लोकेशन रो कोड जोटा मैक्सिमम 4 कैरेक्टर हे परिबो जोडे हमें रखिया कोन रॉ स्टोरेज एला रॉ मटेरियल हमें स्टोर करिबा मनकर मु आ गोटे स्टोरेज बनउची 2000 जोडे हमें रखिबा फिनिश्ड मटेरियल रखिबा फिनिश्ड गुड मनकर SU01 भी गोटे मनकर स्टोरेज बनउची जोडा हमरो जनरल स्टोर right so this way you can create the multiple storage location for your plant right eta first plant under रे तीनटा storage location बनेले similarly second plant under रे भी हमें storage location बनेबा execute again second plant the SU02 enter go for the new entry so हमर जो कटक रे जो प्लांट अछि सेकंड प्लांट अछि ता अंडर रे मनकर मु 1000 भी सेटे गोटे स्टोरेज लोकेशन बनौछि जोडे हमें रखिया रॉ मटेरियल ठीक है आ गोटे स्टोरेज लोकेशन बनौछ मनकर SU02 जोटा हला हमर सेठी जनरल स्टोर so as per the requirement of the company you can create multiple storage location so this way you have to define the storage location and then last level is we have to create the purchasing organization so here you have to create the purchase organization same within the material management here you have to create the maintain purchase organization so click on execute so here we will copy the standard one so standard one is 1000 click on this one then click on copy and give the purchase organization name so let example
S1 is our company code ର ଯାହା କୋड ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେମ୍ କୋଡଟା ଦଉଛି as a purchase organization also। so ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସୁସ୍ମିତା purchase org, right? so click enter, then click on save। so ଆମେ ଗୋଟେ purchase organization ବନେଇଲେ SU S1 ବୋଲି। सो आमर जहाँ भी प्लान थिला जहाँ भी क्रिएट करिया पई से सब जिनस आम क्रिएट कले कंपनी कंपनी कोड प्लान ये सब जिनस क्रिएट कले। सो एबे नेक्स्ट जिनस आम कौन करिबा, सो लेट एग्जांपल आमर कंपनी कोड आम बनैचे एसयू एस1 बनैचे, राइट? तो सिस्टम केमती जानिबो कि दिस कंपनी कोड बिलोंग्स टू दिस कंपनी, कि आम जो प्लांट बनैले मनकर दीटा प्लांट बनैले SU01 एंड SU02 कि सिस्टम केमती जानिबो कि जो प्लांटटा ए कंपनी कोड अंडर आसुची बोली, राइट? तो तापाई असाइनमेंट आमको करिया पई पड़ियो। तो आमे फास्ट कोन करिया एबे ताले कि कंपनी कोड को आमे कंपनी सहित असाइन करिबा so that the system will recognize this company code belongs to this company। similarly we will assign the plan to the company code so that system will recognize these plants are belongs to this company code, right? Next, storage location to plant, but it is not required। why it is not required, you will get the interview question ଆସିବ कि how to assign the plant to the storage location, your answer need to be like you don't need to assign the storage location to the plant because during the storage location creation already we have given the plant details। कारण जो आम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कले फास्ट आम कौन देले प्लांट दे सारापर जाकि स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कले, दैट मीन्स स्टोरेज लोकेशन इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन द प्लांट, सो यू डोंट नीड टू असाइन अगेन। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू असाइन द परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू द प्लांट एंड कंपनी कोड। प्रीवियसली मुझे कही कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन सब क्या सहित आसी थाए प्लांट एंड कंपनी कोड सहित असाइन होगी आसी थाए। जमी मुझे आगुरी कही कौन मन टाटा कंपनी रहा, टाटा कंपनी अंडर में आम गोटे परचेज ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, दैट इज द पॉसिबिलिटी। बट हाँ यहाँ भी होपे कि भुवनेश्वर में टीसीएस गोटे ऑफिस अच्छी, भुवनेश्वर भी तार गोटे परचेज ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, यहाँ भी पॉसिबिलिटी आसो। दैट मीन्स परचेज ऑर्गेनाइजेशन मे बी असाइन्ड विथ द प्लांट एंड इट मे बी असाइन्ड विथ द कंपनी कोड। So now what you have to do, we have to define everything। now we will do for the assignment। so definition पर एटा पुणी definition क्लिक कर दबो, it will be minimize ता अंडर एटी अछि assignment। so you have to expand this one assignment, then similarly you have to go for the financial accounting again। financial accounting को जिवो एटी तुम पाइबो assign company code to company, एटा हमें company code को company सहित assign करिवा। so click on execute। so then here you have to click on a position, right? go for the position, search your company code, our company code we have defined as SUS1। so enter, you will find in the top this is our company, right? A company code, so we have to assign our company code to the company। so company हमें कौन define कले SUS01, SUS01 was our company, right? so just click enter, then click on save। that means what, the company code is assigned with our company, the company code is assigned with company। so this is the first thing। then next step, financial accounting for, then we will go for the logistic general। within logistic general we have to assign the plan to the company code। first हमें कौन कले कंपनी को कंपनी कोड सहित असाइन कले दीटा कले, तापर प्लांट को कंपनी कोड सहित असाइन करिवा, तो सेटा कोडी करिवा लॉजिस्टिक जनरल। देन हियर असाइन प्लान टू कंपनी कोड, एग्जीक्यूट करो। सो एडी देखो एडी हमर कोन अछि, एडी न्यू एंट्री अछि, राइट? सो यू हैव टू गो फॉर द न्यू एंट्री, पुट योर कंपनी कोड हियर। कंपनी कोड आमे कोन बनेछे SUS1, पुट योर कंपनी कोड, तो एडी आसी गला कंपनी कोड। देन पुट योर प्लांट, तो प्लांट हमर फर्स्ट प्लांट हैला कोन SU01। सो नाउ गोटे कंपनी कोड अंडर रे गोटे प्लांट हैला, बट वी हैव डिफाइंड टू प्लांट। सो कंपनी कोड पुणी थरे दियो, कंपनी कोड हैला SUS1 and the plant is second plant is SU02, राइट? ता माने गोटे कंपनी कोड अंडर रे हमर दीटा प्लांट अछि बोली सिस्टम जानला। नाउ क्लिक ऑन सेव, राइट? इट इज डन।
सो देन आफ्टर एटा प्लांट को आम कंपनी कोड सहित असाइन करदे आम जा मटेरियल मैनेजमेंट को. सो हियर मटेरियल मैनेजमेंट go for the material management. Here what you have to assign purchase organization to company code. कारण कि थर्ड आम करार ना जोटा मुझे कही कि स्टोरेज लोकेशन को प्लांट किसी दरकार ना कारण यहाँ ऑलरेडी असाइन होती. सो एबे आम कौन करिया परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट और कंपनी कोड सहित असाइन करवा. सो ये अच्छी असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड. क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. सो ये आम जा देख जो न्यू एंट्री थी असाइन कला समय न्यू एंट्री जाऊे जोटे न्यू एंट्री ना पोजिशन जाऊे जोटे न्यू एंट्री थी देखो ये डिस्प्ले मोड रे सब जिन थी यहाँ जमी ये कौन अच्छी एडिटेबल मोड अच्छी बट जो न्यू एंट्री थी असाइनमेंट कला समय से एडिटेबल मोड न थाए. तो ये केस आम कौन जा पोजिशन को जा परचेज ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर SUS1. राइट दिस इज आवर परचेज ऑर्गेनाइजेशन. पुट योर कंपनी कोड हियर. आवर कंपनी कोड इज SUS1. So click enter, click on save. That means our purchase organization interlinked to the company code. It is done. Now go back. तो सेकेंड है कौन असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट. परचेज ऑर्गेनाइजेशन को आम प्लांट सहित असाइन करवा. एग्जीक्यूट करो. ये देख ये न्यू एंट्री अच्छी तो से सब जिन डिस्प्ले मोड रे अच्छी. सो गो फॉर द न्यू एंट्री. सो पुट हियर द परचेज ऑर्गेनाइजेशन. आवर परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज SUS1. राइट. सो देन ସାର୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି. ओके. सो एबे आमे कोन करछे परचेज ऑर्गेनाइजेशन को आमे प्लांट सहित लिंक करूचे. राइट. सो एडी आमे परचेज ऑर्गेनाइजेशन देले एडी तापर प्लांट आमे कोन क्रिएट करछे SU01. सो पुट हियर SU01. सो ता माने हमर परचेज ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्लांट सहित आमे लिंक करेले. सेकंड सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन गोटे परचेज ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आमर सेकेंड प्लांट सहित भी आम सेटा इंटरलिंक करेगा. SU02 इज आवर सेकेंड प्लांट. एंटर क्लिक ऑन सेव. एबे कोन होला हमर परचेज ऑर्गेनाइजेशन को आमे प्लांट सहित लिंक करेले. सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप होला कोन एडी गोटे अछि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट. एटा भी आमे को करबा एग्जीक्यूट करबो. ये न्यू एंट्री ना सो वी विल गो विथ द पोजिशन. पोजिशन गला प्लांट दियो. आवर प्लांट इज SU01. देन पुट हियर द परचेज ऑर्गेनाइजेशन. परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन होला SUS1. एंड एडी हमर परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगेन दियो सेकंड प्लांट पई SUS1. देन क्लिक एंटर. देन क्लिक ऑन सेव. राइट. So this much is the configuration for the enterprise structure. जानी तुम मैंने बुझी पार नथिबो किछि किछि पिला काहे बुझी नथिबो मु जानी कारण तुम मैंने फर्स्ट क्लास रो रिकॉर्डिंग गो थ्रू कलन तुमको लागला कि हां किछि तो पढ़ा है नहीं ठीक अछि. सर फास्ट जो क्लास दीटा हे जी सर से दीटा जको मु भलो से सर पढी माने रिकॉर्डिंग सुनी जी. सुनिछ तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कोन जानि छु. आज्ञा सर. तार यूज कोड हियर रहयो जानि छु कि गोटे प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रे जिबा जदी हम फर्स्ट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनेबा जानिलो. आज्ञा सर. हां तापर जो कंपनी कोन जानिछो कि जो एग्जांपल देइतिबी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी हैला कंपनी टाटा ग्रुप अंडर जेरा जोड़ा सब रहिला मनकर टाटा मोटर्स TCS एटाला गोटे गोटे कंपनी कोड तापर TCS सेटा जानि सर सेटा सब जानिछो तो सेटा को हम भी SAP रे सर्वर रे क्रिएट करले. ठीक अछि. से सब जिन गुड़ा ए क्रिएट कले. ठीक अच्छे. थे गो थ्रू कर जानी मत लगे तुम फास्ट क्लास जान से डिफिकल्ट हम सर देइथिले रिकॉर्डिंग सब सेटा तो सर. हाँ फास्ट क्लास से जहाँ पढ़ाई जो फास्ट सेकंड क्लास रे सेटा एबे खाली तार कोन आमे प्रैक्टिकल करेले एटा बुझिबलो. हाँ. सो एबे आमे कौन करिबा कि आमे जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एबे बनेले ए जो आमे कंपनी बनेले कंपनी कोड बनेले तापर आमे कोन करले असाइन करले कारण सिस्टम न जानिबो केमति कि मनकर हम कहले TCS टा टाटा अंडर रे आसुची. राइट. सिस्टम केमति जानिबो तो सेति में आमे असाइनमेंट करले. फर्स्ट आमे डिफाइन करले तापर आमे असाइन करले. राइट. एबे आमे असाइनमेंट सरी गला. सो ए जो स्ट्रक्चर टा आमे एबे बनेले सेटा तमे देखियो केमति ता पय गोटे टी कोड अछि EC01.
to check enterprise structure, the T code is EC01 ठीक अच्छे। सो आमे ये EC01 जब टी कोड को जीवा EC01 सिस्टम रे किसी आसीबनी कहीं आसीबनी जिते बेले गोटे पेज ओपन थिबो एसएपी रे सेते बेले अन्य कोनोसी टी कोड काम करिवो नाही। तो से केस रे कोन करियो तुम आइदर बैक करके मेन पेज रो टी कोड पुट करिवो किंबा एटे तुम स्लैश ओ दबो तापर टी कोड दबो काम करिवो। टी कोड हला कोन EC01 बट ता पूर्व मु देली कोन स्लैश ओ देले कोन हबो जो पेज टा अछि ऑलरेडी सेटा रहिबो ता सहित आ गोटे नुआ पेज ओपन हबो EC01 रो बुझि पाइलो। तो जिते बेले गोटे पेज ओपन थिबो सेते बेले कोनोसी टी कोड काम करिवो नाही। तुम यदि आउ गोटे पेज ओपन करिया पई चाहूछो ताहले टी कोड सहित ता पूर्व तुम स्लैश ओ दबो एटा देकी मु यदि एंटर करबी एबे आउ गोटे पेज ओपन होला। आउ तुम यदि सर्वर टिके आसीबो एटी जीयूआई को आसीबो एटी तळे भी मल्टीपल पेज ओपन हेछि ठीक अछि। एबे EC01 पेज को आसला पर एटी अछि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऊपर क्लिक करिवो स्ट्रक्चर ऊपर क्लिक कला पर देन एटी क्लिक करिवो नेविगेशन ऊपर नेविगेशन देन क्लिक ऑन कंटिन्यू कंटिन्यू कला पर एटी तुम जीवो सर्च ऑप्शन को फाइंड ऑप्शन को जीवो फाइंड करियो तमर कंपनी कोड कोन बनेले SUS1 बनेले एटी सर्च करिवो तुम एटी तमर कंपनी कोड देखिवो सुस्मिता कंपनी कोड बोली आप डबल क्लिक करिवो डबल क्लिक कला पर एमती आसीबो पुणी थ डबल क्लिक करिवो डबल क्लिक कला पर एटी तुम देखिवो कि कोन कंपनी सहित सेटा असाइन हेछि एटा ला हमर कंपनी कोड कंपनी हला कोन SUS01 क्रेडिट कंट्रोल डाटा ऑटोमेटिक कॉपी हेके आसी 1000 रु एटा को इग्नोर करो प्लांट प्लांट एटा में बने जे SU01 SU02 परचेज ऑर्गेनाइजेशन बने जे SUS1 तुम यदि स्टोरेज लोकेशन जीवो ए जो प्लस सिंबल अछि आप रे क्लिक करिवो तो तुम देखि परिवो कि को प्लांट अंडर रे कोन कोन स्टोरेज लोकेशन अछि जदि फर्स्ट प्लांट अंडर रे तीनटा स्टोरेज लोकेशन अछि गोटे 1000 2000 आ गोटे SU01 सिमिलरली एटी परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी का सहित लिंक अछि तुम एटी क्लिक कर परिवो क्लिक कले तुम एमती स्क्रीन देखिवो बुझ पाइलो एटा हला हमर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम जोटा बे डेवलप कले। सो तमर काम कोन रहइबो तम माने तीनटा लाके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनेइबो निज हिसाब रे प्लान करिवो ठीक अछि प्लान करी कि निजर गोटे गोटे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर समस्त बनेइबो बनेइला परे तार स्क्रीनशॉट मते एमती सेंड करिवो से ग्रुप रे समस्त की सर्वर एक्सेस मिल जाई ना का मिलेनी कौन पचारि तार आंसर ना हाँ मिली जाए कार किसी डाउट होला मत पचारि करो ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କଣ ଦିଟା ସିଷ୍ଟମରୁ ଲଗଇନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ସେଥିରେ कौन कहलो ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଦିଟା ସିଷ୍ଟମରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଗଇନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗଇନ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ 11 ୟୁଜର 27 ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତ ମୋର ସେଟା हबନି ବୋଲି सेमे किसी इश्यू आसुଛି मते टे स्क्रीनशॉट दबो ले तुम थरे ट्राई करो यदि सेमिति हला मु सर्वर जाडो आसी ता से तुम कथा हेबी ठीक अछि मते लागु जे माने सेमिति डुप्लीकेट तो हबा कथा नो कारण समस्त गोटे गोटे इंडिविजुअल एक्सेस दिया जाई छी यदि हेइतिबो मु आ गोटे रिक्वेस्ट करी आ गोटे एक्सेस देबी ठीक अछि। सो तुम माने निजर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर तीनटा लेके प्लान करो मु जेते सुस्मिता नेली तुम कोनोसी कंपनी रे एग्जांपल ले परिबो का पई गोटे कंपनी कोड कंपनी प्लांट स्टोरेज लोकेशन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिवो एंड असाइनमेंट करिवो असाइनमेंट कला परे ही तुमको एमदी स्ट्रक्चर देखिबो जदि असाइनमेंट करिवोनी ताले स्ट्रक्चर देखैबोनी बुझि पारछो आ जहां भी क्रिएट करिवो सेटा सेव करिवो आ सब जिंस रिकॉर्डिंग्स रे ऑलरेडी अछि केमती सेव करा जाउची छोटो छोटो जिंस भी एथरे अछि केमती हमें स्ट्रक्चर देखिले तो सेटा जते बेले तुम प्रैक्टिस करिवो ट्राई करो गोटे नोटपैड निज पाखे रखिया पई नोटपैड रखो सो दैट